Three, two, one. Assalamu alaikum. Welcome to another episode of Inspiration Talks. I'm very excited about today's episode. I have a very special guest with me today. She is not only a student but also a great singer. So before you think वो क्या करती है, so she is an MBBS student. So जानने के लिए देखिए कि वो singer और singing और MBBS दोनों कैसे manage करती हैं. So before any delay, let's welcome her. Assalamu alaikum, Aeliya. How are you doing today? Assalamu alaikum. I'm doing well. How are you? I'm also good. So, yeah, can you give us a short intro about yourself? Yes, I'd love to. And first of all, thank you for having me and for the lovely introduction. You're welcome. My name is Aeliya, and I'm 21 years old. I live in Islamabad, Pakistan, and I'm currently completing my MBBS degree. And besides that, I like to sing and I like to be creative with my page. So that's it. That's pretty much the introduction. Okay, that's great to know. So, why did you opt for MBBS? Like, what made you feel like MBBS is the right field for you? मेरी कोई इतनी ड्रामेटिक स्टोरी नहीं है कि ओ मैं बचपन से डॉक्टर बनना चाहती थी और ये था up till O levels I never thought I'd pursue biology as a subject because I was doing pretty bad in O levels biology में और मैंने जब A levels ज्वाइन किया तो मेरे सब्जेक्ट्स मैंने completely flip कर लिया from sciences. तो मैंने कहा मुझे नहीं बनना डॉक्टर और मैंने law लिया. I chose law as a subject and I was like okay I'm going to become a lawyer. और जिस दिन मेरी A levels की ओरिएंटेशन थी उस दिन मुझे पता चला कि मेरा तो बायोलॉजी में A स्टार आ गया है किसी ना किसी तरह से. तो मैंने कहा कि ओह अच्छा अब तो हम डॉक्टर बन सकते हैं. तो फिर मैंने उसी दिन ओरिएंटेशन वाले दिन on my first day of college I changed my subjects completely and I took biochemistry, physics and maths. Okay. And then उसके बाद मैंने कहा कि चलो I'll do medicine. फिर जब मेरा A levels खत्म हुआ तो मेरा मेडिकल कॉलेज में पहले साल में एडमिशन नहीं हुआ क्योंकि मेरा एंट्री टेस्ट अच्छा नहीं हुआ. और मैंने कहा ओह तो फिर से मेरा एडमिशन नहीं हुआ. So that was a huge setback, obviously, because I was not expecting it, and I was like, okay, बस ठीक है, I'm gonna not do medicine फिर से. और फिर क्या कहते हैं, but I chose to give the entry test again because I was like, okay, I can't just let it go like that. And that's when I got curious about doing medicine because I was like, okay, I can't just give in to एक try करके. So the next year I gave it and I scored pretty well, alhamdulillah. And here I am. And फिर जिस दिन मैंने medical college join किया, I stepped in. And I started studying. It got so interesting, or I'm so satisfied with what I'm doing. Or like it was like the turning point for me was जब मुझे realize हुआ कि I'm on the other side of the table now. Like पहले मैं throughout my life I was living वो patient वाली side पे ना कि आप वो as a patient जाते हो hospital या इस तरह या you're accompanying somebody. लेकिन it feels really good to be on the other side of the table, like to go to hospital as a doctor या कुछ इस तरह. So yeah. ओके सो क्या मेडिकल की पढ़ाई मुश्किल लगती है लाइक यूजुअली पीपल से कि जो लोग मेडिसिन पढ़ते हैं उनको दिन रात पढ़ना पड़ता है एंड दे कांट स्पेयर इनफ टाइम फॉर देमसेल्व्स लाइक दे डोंट लिटरली हैव टाइम फॉर देमसेल्व्स सो डू यू एग्री विद दिस I think you have to keep a balance. You can't just, it's very easy to get caught up in that bubble कि बस अब मैं मेडिसिन ही कर रही हूँ और आप frustrated हो जाते हो. फिर आप जब when you're not being productive enough फिर आपको गुस्सा आता है. Then you start comparing yourself to others. It's like really easy to get caught up in that cycle, and it happens to me as well. लेकिन पढ़ाई tough है, बहुत tough है. मतलब it's a lie when people say कि नहीं इतना मुश्किल नहीं है whatever. It is really tough, but if you're studying consistently, अगर आप रोज पढ़ रहे हो, रोज से नहीं लेकिन मतलब occasionally पढ़ रहे हो साथ you're up to date, you're keeping your internals अच्छे, तो then it's relatively easy. Like you have to distribute the workload. लेकिन मैं ये नहीं करती. मैं आखिरी दिन पढ़ती हूँ. लेकिन हाँ because I work well under pressure. So but yeah it is tough. It's not an easy field. There's no room for error. You can't make a mistake because you're dealing with human life. So वो काफी pressure होता है. लेकिन it's also interesting at the same time. So yeah it's good. It feels good to work hard. Yeah it is actually like अच्छा अब बचपन की तरफ जाते हैं. Let's revive some childhood memories. So जब you were छोटी, what was your favorite subject? My favorite subject was Urdu. उर्दू मुझे बहुत पसंद थी और है भी. वो अलग बात है कि ओ लेवल्स के बाद एज अ सब्जेक्ट उसको नहीं पढ़ा और बहुत टाइम हो गया कुछ लिखे हुए और यूनिवर्सिटी में भी नहीं पढ़ाते.
तो अब मुझे थोड़ा अफसोस भी होता है कि मेरा वो जो उर्दू से कनेक्शन था ना, ताल्लुक था, उर्दू में ही मैं बोल रही हूँ लेकिन वो मतलब कम हो गया, क्योंकि मेरी एक टीचर थी, अगर वो ये देख रही हूँ कभी किसी भी इसमें, मेरी एक टीचर थी मैम आसिफा, और उन्होंने शी चेंज माई लाइफ रिगार्डिंग उर्दू, क्योंकि उन्होंने मुझे उसको एज अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया, मतलब उन्होंने मुझे एज एज अ लैंग्वेज पढ़ाया, एज लाइक हमारी ज़ुबान पढ़ाया, और एंड शी वाज लाइक यू कैन राइट ब्यूटीफुली, एंड शी इनकरेज मी सो मच। तो उसकी वजह से मुझे मजमून लिखने में, मकालमे लिखने में, तकरीरें लिखने में, ड्रामे लिखने में बहुत मज़ा आता था। तो आई होप आई कैन डू दैट अगेन विद माई सॉन्ग्स I इंशाल्लाह really soon. hope that too. All Yeah, the best for that. Acha, thank you. so are you afraid of anything? Like, do you have fear of anything? बचपन में मुझे मैं बचपन में बहुत ओवर अचीवर होती थी, मतलब मुझे हर चीज़ के टॉप पे आना, लाइक बस बेस्ट इन क्लास, बेस्ट इन एक्स्ट्रा करिकुलर, बेस्ट एट होम, सबसे ज़्यादा दोस्त, वो वाली बच्ची होती थी मैं। और क्या कहते हैं, वेरी पैम्पर्ड, एंड मतलब पेरेंट्स की हमेशा एक्सपेक्टेशंस पे फुल। और क्या कहते हैं, हालांकि माय पेरेंट्स वर नेवर लाइक कि बस ये तुमने ये करना है और नंबर 1 आना है, वो दे वर ऑलवेज वेरी लाइक, दे गिव मी एन ओपन वो कि डू व्हाटएवर यू वांट। लेकिन क्या कहते हैं, सो माय बिगेस्ट फियर एज अ किड रिगार्डिंग दैट वाज फेलियर। मुझे आई हेटेड फेलियर, लाइक आई कुड नॉट लाइक एनीथिंग बिलो द स्टैंडर्ड दैट आई हैड सेट फॉर माय सेल्फ। वो इट वाज लाइक I was terrible at dealing with failure as a kid. लेकिन that has changed because now obviously I know more. लेकिन हाँ, I was afraid of failure. Acha, so like, what did you think would be awesome to be an adult, but it isn't as awesome as you thought it would be? इसमें ना, it's like this is something that I think about a lot. And I mean it's crazy to me कि this is how the world works. लेकिन I think मैं बचपन में सोचती थी कि I would be very independent as an adult, क्योंकि जब मैं बचपन में देखती थी ना कि बड़े लोगों को तो किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है बाहर जाने के लिए, और बड़े लोगों को तो अम्मी अब्बू नहीं पूछते कि कितने बजे वापस आ रहे हो, और ये तो और मुझे पसंद भी था कि जब अगर कोई गेस्ट आते थे या कुछ आते थे और मेरी अम्मी कहती थी कि 9 बजे तुम्हारा बेड टाइम है, I would want to sit outside with the guests. I always liked talking to people older than me because I was like, oh, they know more and they're better conversation holders and stuff. तो लेकिन मुझे बड़े होके पता चला कि you're only free as a child. Your freedom, आप independent हो जाते हो लेकिन आप free नहीं रहते। तो क्योंकि you get chained by so many responsibilities and workload and दोस्तों की commitments होती हैं और family की commitments होती हैं, और like the choices you make, the actions you do, they have consequences, big consequences on your life and on other people's lives. तो वो जो responsibility का वो होता है ना, as a kid you have other people taking care of anything you do, so you're only free as a child. And I think कि आपके fears कम होते हैं as a kid. So you, at least for me, that I'm only speaking for myself, लेकिन like you lead from the heart when you're a kid, and then gradually you're forced to like start thinking and not lead from the heart, which is I think tragic in a way, क्योंकि I think कि कभी कभार आपको दिल की सुननी नहीं चाहिए। तो बिल्कुल 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 ठीक कहा। तो like I agree with you. अच्छा, तो अब जैसे कि you are singing songs as well, so what made you feel like कि is it like बचपन का शौक? It is बचपन का शौक। क्या कहते हैं, बचपन से स्कूल के choir में होती थी, सबसे आगे माइक पकड़ के मैं गा देती थी ना। लेकिन क्या कहते हैं वो that was up till 8th grade, and after 8th grade I got a guitar. Actually I forced my father to buy me a guitar, और क्या कहते हैं वो मेरे लिए बहुत महंगा सा गिटार जो है ना वो बाहर से लाए, और उन्होंने कहा कि वाह अब तो मैं सीखूंगी बस 2 दिनों में और फिर मैं गाना गाना शुरू कर दूंगी, और फिर मुझसे नहीं सीखा गया। और मैंने कहा ओह ये तो बहुत मुश्किल है। तो फिर मुझे ना मेरे पेरेंट्स बहुत इस तरह डांटते थे कि यार तुमने इतना उससे गिटार मंगाया ये वो, और तुम्हें अभी तक आता नहीं है, और मतलब फालतू में एक चीज़ पड़ी हुई है और इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट। I was like अच्छा ठीक है। तो वो मुझे ना वो बहुत चीज़ बॉदर करती थी कि this is something I couldn't do, and like it's so I locked my guitar up in a cupboard, और मैंने 4 सालों के लिए अपना गिटार छुपा दिया, क्योंकि मैंने कहा कि मुझसे सीखा नहीं गया, तो अब मैं इसको छुपा देती हूँ तो फिर ये किसी को नजर नहीं आएगा, तो फिर कोई मुझसे बात नहीं करेगा सामने। और फिर 4 years later I was like
I think in 2017, I was like, yeah, guitar nikalti hu. Like I have a full-fledged guitar in my cupboard. Like I should just learn it. So I got a teacher for that, and I took 2-3 weeks के lessons I took from him. और वो बस मैंने उनको कहा कि सर आप मुझे बहुत स्लो सिखा रहे हैं, ठीक है, बस मुझे जल्दी जल्दी गाने सिखाएंगे ना. तो उन्होंने कहा कि नहीं फुल प्रॉपर होता है. मैंने कहा ठीक है. खैर आई क्विट दैट those lessons because I was like, oh no, this is too slow. And I just started YouTubing chords and I started YouTubing songs. और फिर मैं practice करती रही for a month, 2 months. And that's how I learned the guitar. And then that's where my story started. और उसके बाद मैं लोगों के सामने नहीं गाती थी. Okay. एक साल तो नहीं, like A levels में किसी को नहीं पता था कि मैं गाती हूँ until like the last 2 months. और एक दफा I played a voice recording to my friend and she secretly posted it on her Instagram. और मैंने अगले दिन सारे आके मुझसे पूछे थे कि यार तुम गाना गाती हो and stuff. And I was like, नहीं मैं तो नहीं गाती. और इस तरह, you know, so I was shy that way. Like I don't know, I didn't sing in front of people. It was my little secret. But now here I am. So yeah. Now the shyness went away. So how did you overcome by your shyness? अच्छा ये मुझसे ना I was talking to somebody about this at the beginning when I wouldn't sing in A levels ना. So like people used to ask me, you have such a good voice. Like they were like, somebody asked me once, and it was a great question. She asked me, do you struggle with confidence? Yeah, do you struggle with like what people will think of you? कि तुम्हें गाने से डर लगता है या तुम लोगों के ओपिनियन से डर लगता है ना. तो मैंने कहा कि नहीं मुझे गाने से डर लगता है. So the thing was कि I think I just it was mostly support from people I knew and my very close circle. Like their support, their encouragement, it lifted me up, and it was like, and वो मेरे जितने भी fears थे ना वो सब उन्होंने उसको इतना अच्छा address किया और उन्होंने इतना reassure किया कि nothing bad is going to happen out of this. And that's when I decided कि, and in the end my friends were literally like pushing me, begging me to बस make a page. तो इसलिए फिर मैंने बस बना दिया. And I was like, why not, like I love to sing. It's like therapy to me. तो फिर why shouldn't more people listen to it? And फिर I got such a good response, alhamdulillah. तो बस yeah, that's how I made it. Okay, that's great. So वैसे क्या are you afraid of the opinions of people? क्या लोगों के opinion से डर लगता है, like negative comments वगैरह? क्या do you feel like अगर कोई negative comment करेगा तो you will get discouraged? Because sometimes ऐसा होता है कि एक अगर इंसान negative comment कर दे तो the other person gets distracted. Like आप अगर ना भी सोचो तो भी आपके mind में revolve करती है वो comment. I do. It obviously affects me, and people's opinions. I have to accept they do affect me. Lekin it's like it really depends on how long you hold on to that. क्या कहते हैं जब कोई मुझे कोई negative comment आता है या कोई मेरी आवाज के बारे में कुछ कहता है या physically appearance के बारे में कुछ कहता है, तो I usually respect the opinions of people closest to me most. So that includes my family and my friends because they obviously know me on a personal level. तो वो अगर मुझे किसी के बारे में ओपिनियन देते हैं कि वो ये से इस तरह है या इस तरह है, तो I do consider that, वो I respect. But as far as like negative comments are concerned, for a short period of time it does affect me. लेकिन when I really think about it, so it doesn't really matter, especially through social media because it's probably somebody free, nothing to do, and they just wrote something. So social media तो बिल्कुल ही unpredictable है ना, मतलब किसी को everybody has access to it. तो वो that kind of like reduces the value of that comment or whatever because you're just like you don't even know if this is a real person who wrote this. That's not really how it does affect me. लेकिन उसके बाद I'm good. Agree with you. अच्छा इससे एक और question, जैसे कि like when you made your page to public, so like जब पहली video post की, तो how was the like reaction on the video? क्या you got like, what did you expect that you will get more views or you will get less views from people? I was actually more excited than nervous. मुझे बहुत ज़्यादा excitement थी of posting it because I was like, oh my god, I'm finally like doing this, like I'm like finally people are gonna listen to me and they're gonna know who I am. तो मुझे वो बहुत excitement थी और मुझे बहुत खुशी भी थी. और जब मैंने वीडियो पोस्ट की थी तो yes, I was expecting a good response. और मतलब जिस तरह मैंने response expect किया था ना बिल्कुल वैसे ही मिला. मतलब मैंने बहुत वो नहीं सोचा था कि मैं वायरल हो जाऊंगी पहले इसमें, लेकिन मुझे ये था कि हाँ I will get
decent amount of followers through this. और exactly वही हुआ था, like अभी recently बल्कि big magazines and singers started recognizing me, लेकिन उससे पहले I was just like अच्छा ठीक है, I want like I want active listeners, like who appreciate my genre of music and who relate to whatever I'm singing. Like चाहे वो कम ही हो, it doesn't really matter. Like as long as like they're actually connecting with me through my music, and as long as like it's actually making them think back of something that happened in their life, या उनको कोई memory याद आती है उससे सुन के, because that is how I listen to musicians as well. Like you should have a very like genuine active audience. It doesn't really matter आपके कितने follow. It's just like you should have just a group of people जिनको you can call your family, and like who you can like connect with through your art. So that's what's most important to me. That's right, totally. That's true. Acha, you are, let's imagine inspired. So, if you get a chance to live anywhere for one whole year, कोई भी country में एक साल रहने का मौका मिले, तो कौन सी country will you opt for? Country एक I can't pinpoint, लेकिन I'd love to go to Europe. It's my dream. क्योंकि वो सब interconnected है. तो आप एक जगह जाते हैं, हाँ. I just want. It's my dream. It's inshallah one day. Inshallah. But it's an absolute dream to go to Europe and just have a cup of coffee or like in a cafe and watch the sunset. Explore streets. I'm like the type of person मुझे ज़्यादा वो मुझे ना like when I go somewhere I like to live as a local. So like I don't like to go there as a tourist. क्योंकि मुझे सिर्फ वो नहीं होता कि मैं tourist sites देख लूँ बस और उसके बाद मैं घर चली जाऊँ. Like I want to like actually live like the locals do. उनका लाइफस्टाइल, वो कौन सी दुकान पे जाके ग्रोसरी लेते हैं, कौन सी स्ट्रीट्स में गुजरते हैं, कहाँ से टैक्सी पकड़ते हैं, पार्क्स कहाँ हैं, लाइक स्पॉट्स दैट लाइक लिटिल स्पॉट्स यू नो. लेकिन जो एक्चुअल एक्टिव टूरिस्ट साइट्स होती है ना, वो मुझे इतनी अट्रैक्ट नहीं करती. आई डोंट नो व्हाई. लेकिन obviously I like to go to them. लेकिन I just if I could live somewhere for a year or if I'm visiting some place, so I just like to talk to the locals. What do they eat? How do they live? मुझे वो बहुत interesting लगता है. Okay, that's great. अच्छा, if you get a chance for time machine, so क्या you would prefer to go in your past or in your future? पास्ट में मैं सिलेक्टिव मेमोरीज चूज कर सकती हूँ या पूरा पास्ट? पूरा पास्ट ही मिलेगा ना टाइम मशीन में. पूरा पास्ट नहीं, बस फिर हम फ्यूचर में चलते हैं क्योंकि पास्ट तो बस हो गया ना. इतनी मुश्किलों से मैं उससे निकली हूँ तो फिर वापस तो नहीं जाना ना. That's good. I'd like to go to the future. लेकिन I'd like to fast forward to 27. Oh, why 27? Struggling वाला phase. I think 27 तक, considering inshallah, considering my career, I just want to find out if I'll be stable, like financially, economically, relationships wise, like friends में कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, family में किस तरह पूरा setup होगा. Because I feel like by 27 you kind of you get closer to making those choices. So वो है कि I want to find out कि where I am at 27. Okay, wow. Find out करने का तो पता नहीं. God knows कि 27 तक क्या होता है, क्या नहीं होता है. हाँ, exactly वही ना. लेकिन अगर टाइम मशीन हो तो चलो. हाँ, तो फिर उसमें चांस मिल ही जाएगा. हाँ, वैसे तो अल्लाह में अंदर पता है. वैसे इमेजिन कर सकते हैं 27 तक क्या हो सकता है. अच्छा, तो अगर चांस मिले, अगर मौका मिले कोई रियलिटी शो में जाने का, कौन सा रियलिटी शो चूज करोगे? अच्छा, मुझे मास्टर शेफ में जाना है. I want to go to मास्टर शेफ and cook and compete. मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया या फिर I also want to go to Wipeout. Okay. If you have seen Wipeout, it's so fun. और मैं हमेशा जब भी Wipeout देखती थी ना तो मुझे लगता था कि ये वाला ऑब्स्टिकल मैं कर सकती हूँ रेसिपी. So yeah. Okay, all the best for both. दोनों में से किसी एक में चांस मिल जाएगा कभी ना कभी. और okay, ठीक है. अच्छा, तो what do you usually do जब गुस्सा आता है? Like गुस्सा हर एक इंसान को आता है, तो what do you often do जब गुस्सा आता है? या चुप रहती हो या you freak out? जब गुस्सा आता है तो मैं बताती नहीं कि मुझे गुस्सा आ रहा है. Oh, wow. हाँ, ये बिल्कुल अनहेल्दी बात है. लेकिन मुझे कॉन्फ्रंटेशन से ना बहुत डर लगता है. पहले ज्यादा डर लगता था, लेकिन अब जो है थोड़ा कम डर लगता है. मैं थोड़ा कर लेती हूँ. लेकिन अगर मुझे बहुत किसी चीज को गुस्सा है ना, लाइक फुल, तो मैं नहीं बताती और आई जस्ट गो एब्सोल्युटली क्वाइट.
लेकिन क्या कहते हैं, if I'm like generally mad at my sister for something या कभी किसी तब चाहिए तो बस वो फिर एक दफा मैं चीखती हूँ, उस वक्त खत्म हो जाता है. लेकिन generally I'm not very confrontational. Also I don't argue a lot. मतलब अगर मुझे किसी के पे गुस्सा है and stuff, like हमेशा I try to like end that without any argument. Like I mean in terms of raising your voice या raising your tone या using bad language, मुझे वो बहुत अजीब चीज लगती है. So इसलिए कहते हैं I just try to have a conversation कि ओ यार इस बात से मुझे गुस्सा आया था तो ये था, and then they usually have an explanation या फिर it's just like the situation diffuses. तो हाँ ऐसा था, but I'm not very confrontational गुस्से के मामले में, which is something I'm trying to work on. ठीक है. अच्छा तो what about stress? जब stress होता है तो what do you do to relieve your stress? Stress जब मुझे stress होता है तो या तो मैं गाना गाती हूँ. Okay, मैं सब that's कुछ nice thing. अच्छा रहता है. ये जब आप What makes you happy? तो सारा स्ट्रेस आ गए तो वाह क्या गाना लिखा है ना, क्योंकि आप उस वक्त उससे रिलेट कर रहे थे. लेकिन जब मुझे स्ट्रेस होता है यूजुअली या तो मैं आई फोन अ फ्रेंड और समथिंग, या फिर क्या कहते हैं आई जस्ट लाइक आई लाइक टेक अ ब्रेक. यू नो आई थिंक डूइंग नथिंग वो मुझे चाहिए होता है कि जस्ट आई एम सिटिंग डूइंग नथिंग चिलिंग, और कोई वो बर्डन नहीं है कि अभी ये करना है वो करना है. सो चाहे मुझे जितना मर्जी स्ट्रेस हो, चाहे अगले दिन एग्जाम हो कुछ हो, आई थिंक टेकिंग अ ब्रेक इज रियली इंपॉर्टेंट. So I just try to take a break उस वक्त. मतलब I don't do anything उस वक्त. मेरे दिमाग में कुछ नहीं था कि I'm actively doing something to get de-stressed. I'm just like not doing anything, not thinking about anything. So that's what I do. Okay, ठीक है. अच्छा तो where do you see yourself in next 5 years? Probably outside of Pakistan. Okay. Not in Pakistan. Inshallah. Inshallah. I really want to go abroad. क्या कहते हैं? To finish with my degree, and also I think I just want to like grow as a person. I want to. अभी आजकल मुझे ये realization हो गया कि I want to become more informed on things, like on general knowledge, on everyday के किस तरह क्या काम होता है, उस तरह की चीजें. like instead of like ये जो like होता है ना आपका party mode होता है कि बस आप it's just studies and party and studies and party. But I want to like get more informed on things, actual factual information, not like opinions, not like जो आप बस बातें सुनते आ रहे होते हो. So I just want to gain knowledge on different things, just on business, on languages, on psychology. So that's where like I just want to grow. I think you want to grow and you want to know what other people think, like psychology of thoughts of different people, like everyone has just like generally like I think I just want like मतलब जितना मुझे अभी पता है ना, I want to gain more information on things ताकि I can have better conversations, ताकि I can like make better decisions. Or also I see myself outside of Pakistan, inshallah practicing medicine. और साथ I want to do concerts. I want to sing, I want to do concerts, and yes. All the best for your concerts and जो भी you have decided for going abroad. I really wish you all the best from the bottom of my heart. अच्छा. Thanks. You're welcome. अच्छा, so what advice would you like to give to those who are thinking कि वो MBBS की field में आ जाए, या अगर they wanna like do singing but they don't have that much courage to come in the media. So what would you like to say on this? I think हर किसी की अपनी वो होती है, choice होती है, choice होती है, और हर किसी की situation different होती है, हर किसी की circumstances different होते हैं, वो किन हालात में क्या फैसला ले रहे हैं, बिल्कुल वो different होता है. तो मतलब MBBS के लिए बस मेरा ये एडवाइस है कि अगर आप ये इस करियर इसलिए चूज कर रहे हैं कि इट्स ग्लोरिफाइड, कि आप डॉक्टर बन के बहुत स्पेशल हो जाएंगे और बाकी करियर से आप बेहतर हो जाएंगे. और क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी में ना ये एक बहुत ओवर ग्लोरिफिकेशन है ऑफ a certain profession which kind of undermines other professions. कि this is a good profession, this is a bad profession, और मेडिसिन वाले तो सबसे अच्छे होते हैं और सबसे लाइक होते हैं और इनको ज्यादा इज्जत दो और इसको कम इज्जत. like I think that's absolutely stupid. अगर आप ये फील्ड इसलिए चूज करें ना कि मैं बस डॉक्टर बन जाऊंगी और मेरे साथ डॉक्टर लग जाएगा और क्या कहते हैं बस I'm going to be above everybody else, that's not true. Don't join the field.
if you think you're better at something else, लेकिन आप डॉक्टर सिर्फ इसलिए बन रहे हैं because it's a more respectable career, so that's not true. आप इज्जत जिस भी फील्ड में जाएंगे, आप जितने अच्छे होंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उतनी इज्जत कमाएंगे. तो और आप दिल से मेहनत करेंगे उस फील्ड में जब when you enjoy it. So your primary reason for and it's not, somebody showed me something the other day and it's such a demanding career कि मतलब आप 3 बजे उठ के किसी की जान बचाने जा रहे हैं, तो मतलब आपके अंदर कोई तो ड्राइव होनी चाहिए ना कि आप अपनी नींद सैक्रिफाइस करके जा रहे हैं. तो इट्स अबाउट दैट एंड दैट्स एब्सोल्युटली क्रूशियल. और क्या कहते हैं, नो करियर इज बेटर देन द अदर. आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट, आई एम टेलिंग यू, नो career is better than the other. If you like art, if you like engineering, if you like IT, if you like I don't know, anything, psychology, कुछ भी, इतने सारे careers हैं. Just do whatever you like, you know. Yeah. You'll be the best at that. Exactly. जिस चीज़ में आपको enjoy करते हैं ना, you can be the best at that. लेकिन जो चीज़ आप enjoy नहीं कर रहे और आप बस नहीं उसमें हैं कि क्योंकि सबने कहा था, तो वो you can't be. And best से भी ज़्यादा you just have fun, you know. Yeah. So that's the advice. Okay, that's really nice advice. It was great talking with you, Aeliya, and I really enjoyed talking with you. And I really hope you also enjoyed being part of Inspiration Yes. Talk. And here is a small gesture from me to you. Thank you. I got it. But congratulations to our. Thanks. So let's revive some. So Aeliya, if you get a chance, Sorry. if you get a chance. लेकिन advice